Prime Minister, you are very much among friends here, and your visit is a testament to the strong friendship between Canada and India, and an objective our government has been keenly pursuing since we first came to office. Far be it from me to comment on your domestic politics. However, may I say that the priorities of your government, growth and job creation, infrastructure investment, and the development of a stable, predictable business environment, including lower taxes and job creators, mirrors our own priorities here in Canada. So does your slogan, minimum government, maximum governance. And our experience suggests that such priorities are effective in raising the incomes of large numbers of people. Nous vous souhaitons donc de mener à bien votre programme économique, notamment en ce qui concerne l'objectif principal, soit éliminer la pauvreté. We believe all these economic objectives will also be served by the negotiations that we are pursuing, specifically the Comprehensive Economic Partnership Agreement and the Foreign Investment Promotion and Protection Agreement. Aujourd'hui, au cours des prochains jours, le Premier ministre et moi-même continuerons de discuter de ces points et de nouvelles façons de renforcer nos relations économiques et d'élargir notre partenariat. This is, of course, a growing relationship. Our two-way merchandise trade is today worth nearly $6.5 billion. However, both Prime Minister Modi and I believe it could be worth many billions more. The untapped trade potential between our countries is enormous. Canada has what India needs, and vice versa. To that end, I'm pleased to note that Cameco will supply Saskatchewan uranium for India's atomic energy program over the next 5 years, and I want to take this opportunity to congratulate Premier Brad Wall and Tim Gitzel, President and CEO of Cameco, on this great announcement. Congratulations. Prime Minister and I are also celebrating the signing of a range of agreements, as you just noticed, including cooperation on civil aviation and space, rail transportation, skills development, and higher education, among others. Évidemment, les liens d'amitié entre le Canada et l'Inde ne reposent pas uniquement sur le commerce. We are the inheritors of similar institutions, traditions, and values, with passionate commitments to democracy and pluralism. Such commonalities as these alone would make us friends, but we also share people, and that, Prime Minister, makes us increasingly like family. Aujourd'hui, environ 1,200,000 Canadiens et Canadiennes peuvent se dire d'origine indienne. Today, roughly 1.2 million Canadians can trace their roots to India. This community has not only achieved great success here, but has also brought its rich culture, its festivals, films, architecture, religious, and sporting life. We are encouraging closer people-to-people links through the reforms our government has made and continues to make to our immigration system, notably the program CAN Plus in India, so that those from India who wish to live, work, and study in Canada are increasingly able to do so. Le Premier ministre et moi allons aussi poursuivre la discussion sur les moyens de renforcer notre partenariat en matière de sécurité internationale. Canada is ready to deepen cooperation with India in science, education, defense, and space technology. Over these next few days, Prime Minister, it will be my honor to host you here, and particularly to introduce you to the Indo-Canadian community, to many of the people who are building the even stronger personal and business ties between our two countries. Et, Monsieur le Premier ministre, je suis convaincu que grâce à votre vision et sous votre leadership, le développement de cette relation se poursuivra. So once again, Prime Minister Modi, welcome to Canada. Prime Minister Harper and members of media, I'm delighted to visit this beautiful country and this charming city. I attach the highest importance to India's relations with Canada. This has been reinforced
by my excellent experience with Canada as a Chief Minister of Gujarat. Our relationship had drifted in the past. In recent years, Prime Minister Harper's vision and leadership changed the course of our relations. I am conscious of the significance of this visit in the history of our relations. I have come at a time when the importance of this relationship for our two countries had never been stronger. We are two major democracies with deeply shared values. Canada has the potential to be a key partner in every area of India's national development priority: energy and infrastructure, manufacturing and skills, smart cities and agro-industry, and research and education. Equally, the vast scale of India's transformation and our rapid economic growth offers immense opportunities for Canada. And it exists in a new environment in India, which is open, predictable, stable, and easy to do business in. Prime Minister Harper and I are committed to establish a new framework for economic partnership. I am pleased that we have made rapid progress on long-pending agreements. I am confident that we can conclude the bilateral investment promotion and protection agreement very soon. We will also implement the roadmap to conclude the comprehensive economic cooperation agreement by September 2015. The 13 agreements on skill development reflect my commitment to empower the youth of India with world-class skills for India and the global economy. The agreement on procurement of uranium from Canada for our civilian nuclear power plants launches a new era of bilateral cooperation. It also reflects a new level of mutual trust and confidence. Further, it will contribute to India's efforts to power its growth with clean energy. As the agreement today on space highlights, we have a strong synergy for cooperation in areas of advanced technologies. To support greater engagement and people-to-people contacts, we have liberalized our visa policy for Canada. We will issue electronic visa authorization for tourist visa for Canadian nationals. They will also be eligible for 10 years visa now. Prime Minister and I agree that strong bilateral relationship will provide a solid foundation to pursue our common international interests. We also agree that in the troubled world of today, our cooperation will help advance our shared values and peace in the world. We in India felt Canada's pain
when the city was struck by a senseless act of terrorism. The threat of terrorism is growing. Its shadows extends over cities and lives across the world. We will deepen our cooperation to combat terrorism and extremism. We will also promote comprehensive global strategy and consistent policy and action against all sorts of terrorism and its support. We also agree on the need of enhance our defense and security cooperation. I welcome our recent agreement on cyber security. We both recognize the peace and stability in West Asia will make us safer at home. So will Afghanistan's successful transition. I believe that Canada is a major Asia-Pacific power and should play a more active role, including in regional institutions, in promoting a stable and prosperous future for the region. I look forward to our continued partnership in G20. In conclusion, let me say that ours is a natural partnership of shared values. It is an economic partnership of immense mutual benefit. It is a strategic partnership that can help address many of our shared global challenges. And it is a relationship nurtured by the emotional bonds of a vibrant Indian community of 1.2 million. I am confident that this visit will be springboard for a new strategic partnership between our two democracies. Finally, I sincerely thank Prime Minister and Canada for returning a precious piece of Indian heritage. Prime Minister has also been most gracious and generous in choosing to go with me to Ottawa and Vancouver. There is no better evidence of this commitment to our relationship. There will be no better way for me to experience this country's huge diversity. Thank you. We'll continue with questions from the media. When I call your name, please go up to the microphone. We'll start with Terry Malevsky, CBC. Thank you. I have a question for both Prime Ministers, if I may. Mr. Harper, if you would answer in both languages, as always, we'd appreciate that. We have for years heard wonderful promises about greatly expanded trade between Canada and India, and you have just given us a whole lot more promises. Why should we believe these promises, considering that the record shows the pace of growth is very, very slow, so slow that we still do 10 times more trade with China than with India? So first, why is it so slow? Second, could you give us some details of the uranium deal that you have just signed, and in particular whether that erases the difficult history on this topic? And third, how can two countries with such very different labor and environmental standards conclude a free trade agreement? I will let me answer those first. Trade, in fact, has increased between our two countries over the past decade, with obviously a little bit of slowness during the recession. I would agree it's not where we want it to be, but it is growing. Today's announcement, Cameco's announcement alone, is several $100 million of additional trade. I know we'll certainly be happy to provide you with those details. Obviously, part of what has made this possible is the nuclear cooperation agreement that our governments concluded a couple of years back, which really allowed us to turn the page, as you know, on what had been
in our judgment, an unnecessarily frosty relationship for way too long. And I'm really delighted to see this particular trade deal moving forward. Look, we have trade agreements now with a range of countries. Not all of our trade agreements are with Western developed nations. We have some significant trade agreements, particularly in Latin America, also with Jordan. Look, these trade negotiations are never easy, but there's nothing about India, particularly given that it is a vibrant democracy, nothing that would preclude us from being able to ultimately conclude negotiations. But look, there are many issues to be resolved, but both the Prime Minister and I are determined to move forward. Je vais le répéter, le commerce entre le Canada et l'Inde augmente depuis plusieurs années, un peu plus lentement pendant la récession économique mondiale, mais le commerce augmente quand même. Et avec l'accord qu'on a annoncé aujourd'hui sur la vente de l'uranium par Cameco, c'est des centaines de millions de dollars. C'est une augmentation importante dans notre commerce. Seul cet accord, ça a été possible à cause de la signature de l'accord de coopération nucléaire que nous avons conclu il y a quelques années maintenant pour vraiment rendre possible cette possibilité. Pour une entente de libre-échange entre un pays développé et un pays en développement comme l'Inde, c'est très possible. Le Canada a déjà des accords avec 43 pays. Plusieurs de ces pays sont des pays en développement en Amérique latine, aussi en Jordanie par exemple. Il n'y a pas de raison pour lesquelles on ne pourrait pas conclure une telle entente avec une démocratie très forte comme l'Inde, mais évidemment, il y a beaucoup de choses à négocier, mais nous sommes tous engagés, nous sommes engagés à faire ça. ANI, Smita Prakash. मैं जरूर आपको भी जवाब दूंगा। आपके मन में आशंका है कि पहले नहीं हुआ तो अब कैसे होगा। बहुत छोटी सी बात है, 42 साल तक देश का प्रधानमंत्री नहीं आया था और ये प्रधानमंत्री 10 महीने में आ गया। तो हवा का रुख कैसे बदला है, इसका आपको पूरा अंदाज आ सकता है। दूसरी बात है, आपने लेटेस्ट सारे इंटरनेशनल एजेंसी के रेटिंग देखे होंगे, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, मूडी हो, और हर एक का एक कहना है कि भारत पूरे विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और जब फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है तो उसमें हमारा एक फोकस एरिया है भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। भारत मैन्युफैक्चरिंग हब तब बनता है कि जब उसे रॉ मटेरियल की जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण हो। भारत को जिन रॉ मटेरियल की आवश्यकता है उसका भंडार कनाडा के पास भरा पड़ा है। तो ये हमारा ऐसा संबंध है कि ऐसा नाता है जो आपकी विपुलता और हमारी आवश्यकता को जोड़ता है, जो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का सपना है इसको पूरा करता है। और इसलिए हम दोनों की आवश्यकता है जो प्रगति के लिए गारंटी देती है। और तीसरा विषय यूरेनियम को ले बेच के तराजू से नहीं तोलना चाहिए। भारत और कनाडा का यूरेनियम एक प्रकार से विश्वास का प्रतीक है और मैं मानता हूं
विश्वास ये सबसे बड़ी एनर्जी है जो आने वाले दिनों में हमारे संबंधों को बढ़ाएगी। सारी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण परेशान है। 1/6 पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड भारत है। हम दुनिया को कुछ देना चाहते हैं। क्लीन एनर्जी के द्वारा हम दे सकते हैं। तो हमारी एक ग्लोबल रिस्पांसिबिलिटी है, एक ह्यूमन रिस्पांसिबिलिटी है, जिसको पूरा करने के लिए हम क्लीन एनर्जी पर फोकस किया है। वो थोड़ा महंगा है, लेकिन मानव जाति की सेवा के लिए हमने जिम्मा उठाया है। क्लीन एनर्जी के मेरे मिशन को सफल होने के लिए यूरेनियम अनिवार्य है। और मेरे लिए यूरेनियम ये सिर्फ कोई खनिज नहीं है। मेरे लिए यूरेनियम एक विश्वास है। मेरे लिए यूरेनियम ये विश्व को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने की दिशा में एक प्रामाणिक पवित्र प्रयास है। और उस अर्थ में यूरेनियम का हमारा जो ये संबंध है उसको देखना चाहिए, ये मैं आशा करूंगा। आप कैनेडियन पार्लियामेंट में हैं, जहां पर आतंकवादी हमला हुआ था कुछ महीने पहले। आप कनिष्क एयर इंडिया मेमोरियल भी जा रहे हैं, जहां पर कैनेडियन और भारतीय मूल के लोग मारे गए थे एक टेरर अटैक में। भारत और कनाडा जो है एंटी टेरर एंड इलीगल फंडिंग ऑफ सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स, इस पे कितना कोऑपरेट कर सकता है? एंड माय क्वेश्चन टू प्राइम मिनिस्टर हार्पर, you have been a strong proponent of a larger role to be played by India in international forum. Where do you see cooperation between India and Canada in combating global terror, funding of global terror, and illegal support of terror across borders? Thank you. कनाडा की संसद पर आतंकवाद का हमला, मैं मानता हूं कि संसद ये लोकतंत्र का मंदिर है और लोकतंत्र के पर मंदिर पर हमला वो एक इमारत पर हमला नहीं है। मानवीय मूल्यों में विश्वास रखने वाली लोकतंत्र को समर्पित पूरे विश्व की उन शक्तियों पर हमला है। ये संकट हमने भी झेला था और हम पूरा विश्व अनुभव कर रहा है कि आतंकवाद को कोई भौगोलिक सीमाएं नहीं है, न उसका कोई रंग रूप है। वो मानवता का दुश्मन है और इसलिए जो भी मानवता में विश्वास करते हैं उन सब शक्तियों ने एकत्र आना चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए हमने हमेशा सज्ज रहना चाहिए। और मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस विषय में किसी भी प्रकार की लिपापोती न हो, स्ट्रांग अपने व्यूज रखे हैं, कभी इन चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है और देश के अन्य नेताओं के लिए भी ये मार्गदर्शक रवैया है। कनाडा एक दिशादर्शक बन सकता है। दूसरी बात है, यूनाइटेड नेशन अपने 70 साल पूरे करने जा रहा है। एक 70 साल महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है। कई वर्षों से एक विषय यूएन में विचाराधीन है और न उसको विचार किया जाता है, न उसको आगे बढ़ाया जाता है। अगर टेररिज्म के खिलाफ हमें लड़ना है तो यूएन के अम्ब्रेला के नीचे एक पूरे विश्व को संदेश जाना चाहिए। और जो विचाराधीन मुद्दा है, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, इस विचाराधीन विषय को तत्काल निर्धारित कर देना चाहिए। टेररिज्म की डेफिनेशन होनी चाहिए। टेररिज्म को कौन देश, कौन लोग मदद कर रहे हैं, किस प्रकार की उनकी टेक्नोलॉजी हेल्प होती है, किस प्रकार से उनको फाइनेंशियल हेल्प होती है, किस प्रकार से उनसे वेपन पहुंचाए जाते हैं, उन सारे रास्तों को बंद करने के लिए यूएन में रिजोल्यूशन होना बहुत आवश्यक है।
और मैं मानूंगा कि यूएन जब 70 साल मनाने जा रहा है तो पूरा विश्व मिल करके इस काम को पूरा करे। और मैं मानता हूं कि लोकतंत्र के मंदिर का ये हमला सिर्फ कनाडा की एक इमारत पर नहीं है, ये पूरे मानवीय मूल्यों पर का हमला है और उसको उसी रूप में देख करके हम सब ने मिल करके आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए। I'm not sure I can add much to what Prime Minister Modi has said so well. Fact of the matter is that, unfortunately, in the world we live in, we all face the threat of terrorism as an increasingly real and active phenomenon. Canada and India have, in the past decade, been cooperating more and more on international issues. I think probably most famously, our joint chairmanship of the G20 process on financial sector reform. It's a major international undertaking. But we also have deepened and regularized our cooperation and discussion and dialogue between our security agencies. And this will continue. Look, I think all states, all governments of the world have a shared interest in pooling resources and actions towards eradicating the threat of terrorism. And I think almost all governments of the world recognize this, except for a very few. But this is a special area where, as I say, we've deepened our cooperation with India, and where I think we will deepen it further. Because the fact of the matter is, in my judgment, looking at the long term and the development of our world, I think that Canada and India are two countries that not only share values and institutions, but also share in the world both opportunities and threats. We face many of the same opportunities, many of the same threats and problems. And so we will continue to pursue heightened, deepened cooperation with India on security matters. Je vais le répéter. Pour la réalité de la menace du terrorisme est bien réelle pour tous les pays du monde. Et je pense que la grande majorité, presque tous les pays des Nations Unies, reconnaissent que c'est un problème auquel nous devons répondre d'une façon conjointe. Il y a certaines exceptions, mais juste certaines. Pour le Canada et l'Inde, c'est évidemment la même chose. Depuis que je suis Premier ministre, la coopération sécuritaire est beaucoup plus profonde et je pense que ça va augmenter dans l'avenir. Nous avons beaucoup augmenté notre coopération avec l'Inde en général. Par exemple, le processus de G20 sur le nouvelle réglementation du système financier global. C'est un important développement, mais aussi la sécurité. Nous sommes deux pays avec les mêmes valeurs, les mêmes institutions, et nous partageons, par conséquent, les mêmes opportunités, les mêmes menaces. Et c'est essentiel que nous continuions notre coopération. C'est quelque chose qui est régulière maintenant entre nos agences de sécurité, et ça va augmenter dans l'avenir. Merci, thank you. Thanks, everybody.